Yeah, just I want to tell you what I have for you today. I have for you there is a PDF file, and I will share that PDF file. That PDF file is about John Milton and especially the impact of Renaissance and Reformation on John Milton. Yeah, how do we see, how do we find Renaissance and Reformation spirit in the works of John Milton? You know it very well that in your syllabus means that in the syllabus of GICLT, in that syllabus, you come to know that Paradise Lost and On His Blindness. These two poems are in our syllabus, and I have taken On His Blindness and Paradise Lost. Paradise Lost book first line number 1 से लेकर 26 तक. I explained it in a detailed way, but I didn't tell you कि how do you see, how do you find the spirit of uh, Reformation and Renaissance, because you will come to know with John Milton, both these movements, Renaissance and Reformation, they came to end. They came to end. Yeah, you can say that the period of John Milton was the culmination of Reformation, and Renaissance was twinkling in the age of John Milton. So here I would like to tell you how do you find. But before telling you about Renaissance and Reformation, only in one word, I would like to just say that Renaissance was an intellectual movement. What movement? It was an intellectual movement, while Reformation was a spiritual movement. When I talk about Reformation, you will come to know it's related to the purity of soul, it's related to the purity of heart, it's related to what way we are a true devotee of God. It talks about, you can say, God, Satan, not talks about, but it just tells if we are true devotee of God, what ultimately we think about God, how do we take God, and what God expects us. It means that if I talk about Reformation, Reformation ultimately it refers to what? It refers to uplifting of our morality, uplifting of our goodness and virtue. उसको uplifting करने का नाम, रिनेशन उसको uplift करने का नाम, सॉरी रिफॉर्मेशन. रिनेशन हमारी साइंटिफिक अप्रोच है, और रिनेशा ग्रीको रोमन आर्ट कल्चर का रिवाइवल था. So here I just want to tell one significant point कि how do you see Renaissance and Reformation in the works of John Milton. Just sharing with you this PDF file. I think कि it's visible. If it's visible, let me know. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay, okay. Again, I would like to tell you कि I just delivered a lecture on his blindness. I just delivered a lecture on Paradise Lost, and both the poems are the example of what it has Reformation spirit as well as Renaissance spirit. But how do you see Reformation and Renaissance or its impact or its influence on Milton? Question है कि show how Milton blends in his poetic genius the spirit of Renaissance and Reformation. Blending का मतलब होता है मिक्सअप करना. कैसे जो है जॉन मिल्टन ने अपने वर्क में दो चीजों को ब्लेंड किया हुआ. वो दो चीजें कौन कौन सी? एक तो रिनेशा
और दूसरा आपका कौन सा है, रिफॉर्मेशन. Again, I would like to tell you in here you see what? Here you see blending of the spirit of Renaissance and Reformation. If you go with this man, for the first time you see that he was the first remarkable poet, a giant figure who has taken both the movements equally and who has mingled these two movements in his literary pieces. So what I want to say कि before talking about John Milton, yeah, before talking about the influence of Reformation and Renaissance on Milton, it's important what is Renaissance. It was an intellectual movement. It started with the attack of Turk on Constantinople in 1453 और इसका अपना जो फीचर है वो क्या है, लिबरलिज्म, ह्यूमनिज्म, individualism, cult of beauty, patriotism, scientific approach, and intellectuality, and something to give value to the earthly life also, and what the identity of a person, and global concept of the world, globalization. Second point is reformation. If I talk about reformation, already I told you it was what? It was a religious movement, it was a spiritual movement, and related to unlocking of heart and soul, uplifting of goodness, morality, and virtue. And but these two movements, I'm not using the word ki these two movements were perfected, but I'm using the word these two movements were blended. These two movements were blended by whom? By John Milton. John Milton ने इन दोनों movements को blend किया है. If I talk about Christopher Marlowe, if I talk about William Shakespeare, if I talk about you can say uh, Francis Bacon, Edmund Spencer, or Sir Philip Sidney, so you find most probably you will come to know that you find the impact of Renaissance, not the impact of Reformation. If I talk about John Wycliffe, you only find the impact of Reformation, not Renaissance. But when you talk about John Milton, you find the impact of both these movements, and both these movements have been blended, mixed up. Here I want to say what? Here I want to say one significant point. Milton's work reflects the influence of both the Reformation and Renaissance. जो मिल्टन का वर्क है यह रिफ्लेक्ट करता है किसके इन्फ्लुएंस को? रिफॉर्मेशन और रिनेशा के. Milton's work reflects the influence of both the Reformation and Renaissance. Number one point. He is only the poet. अगर कभी एक क्वेश्चन आता, बहुत कॉमन क्वेश्चन बनेगा, whose works reflect both the influence of Reformation and Renaissance? John Milton. Most of the Elizabethans came under the classical and humanistic influence of the Renaissance. It means that most of the writers of Elizabethan age have only the influence of Renaissance. I told you. Most of the writers, whether you talk about Bacon, you talk about William Shakespeare, you talk about Edmund Spencer, they have the influence of Renaissance. They don't have the influence of what? Reformation. But when you talk about John Milton, you find he blended both these two movements. And humanistic influence of the Renaissance, but did not admit the influence of Reformation on their literary work. On their literary work. So just I want to tell you कि before covering the next point, I just want to know कि did you cover या did you come to know what I want to say? जो मैं बताना चाहता हूँ ये चीज क्लियर हो गई है कि मैं क्यों ठहर रहा हूँ, मैं आपको क्यों क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूँ. Why I have taken this sheet
Why you have to go with this sheet? Because I need a type of perfection, because the particular way the question is going to be changed, आज के समय में जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, वो तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैराडाइज लास्ट को शमीम ने कैसे पढ़ाया था, वहां पे मॉजेस कौन है, वहां पे जो है म्यूज कौन है, वहां पे सिलोवास ब्रूक क्या है. But I didn't tell you about this man in a detailed way. This is why what I want to say when I talk about Renaissance, when I talk about Reformation, when I talk about Elizabethan age, then what the difference do you find between these writers? Writers came in Elizabethan age and writers came in Jacobean age or Commonwealth period or Puritan age. So these things. But here you will come to know ki a very significant point that is about Spencer. स्पेंसर एमंग देम का मतलब कि एमंग एलिजाबेथन राइटर, उसमें से जो स्पेंसर थे, हाउ एवर ट्राइड ऑब्वियसली टू रिकंसाइल द टू इंथुसिज्म. स्पेंसर वॉज द फर्स्ट पोएट who tried his best to reconcile both Reformation and Renaissance in his work. But he tried, but perfection didn't come in his work. Spencer could go no farther than effecting a rather superficial synthesis. उन्होंने केवल दोनों को सिंथेसिस करने का काम किया, जोड़ने का काम किया, ब्लेंडिंग का काम नहीं किया. जो ब्लेंडिंग शब्द है वह किसके साथ आ रहा है? यू फाइंड कि बोथ रिफॉर्मेशन एंड रिनेशा वर ब्लेंडेड बाय जॉन मिल्टन. बट स्पेंसर ओनली सिंथेसाइज्ड इट. सिंथेसाइज उन्हें जोड़ने का काम करते हैं. वही अकेले एलिजाबेथन एज के एक ऐसे राइटर रहे हैं. बट व्हेन यू गो फर्दर you come to know what happened कि superficial synthesis of Renaissance Reformation it was left for Milton. ये जो काम था ईश्वर ने किससे लिया? मिल्टन से लिया, या मिल्टन के हाथों में या छोड़ा गया. और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है, द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर. और मिल्टन के लिए कौन सा टाइटल दिया जाता है? द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर. दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स. Who is known as the poetical son of Spencer? So you will come to know the poetical son of Spencer was John Milton. And the credit goes to that man to blend, not to synthesize. Try to understand these two words. To blend, not to synthesize, both Renaissance and Reformation. I think you got it. Yes, sir. किसी की कोई क्वेरी हो तो यू कैन आस्क यहाँ तक. सर सीट से बता रहे सर क्या? या सीट शो नहीं कर रही सर मेरी काफी देर से. आई थिंक ये डांसिंग जी. जी ब्रिजेंद्र सिंह औरैया से. ब्रिज ब्रिजेन भाई ऐसा नहीं, शीट सबको शो कर, आप थोड़ा सा जस्ट मेरे टच करके दिस साइड और दैट साइड करिए अपना स्क्रीन को. So you find as Dryden called him to homogenize these two perfect whole. Dryden ने बहुत बड़ी पदवी दी, बहुत बड़ा टाइटल दिया. किसको दिया? जॉन मिल्टन को दिया कि ही होमोजिनाइज. और किसको होमोजिनाइज किया है? दीज टू. कौन सी दीज टू? रिफॉर्मेशन एंड रिनेशा इनटू परफेक्ट होल. इफ द क्वेश्चन कम्स who is called, yeah, who has been called to homogenize both Renaissance and Reformation, the credit goes to whom? The credit goes to John Milton. And the title was given by whom? The title was given by John Dryden. What I just told you how Milton, why Milton, and where Milton, especially in the light of Reformation and Renaissance. Now, second passage of this sheet,
The spirit of the Reformation provides the content and spirit of Milton. A very significant point. मिल्टन के जितने भी वर्क हैं उन सारे वर्क का जो कंटेंट है, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो उसका थॉट है, उस थॉट में किसका असर देखने को मिलता है? रिफॉर्मेशन का। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इफ यू टेक पैराडाइज लॉस्ट, इफ यू टेक ऑन हिज ब्लाइंडनेस, what is the content? The content is religious content. The content is related to spirituality. The content is related to unlocking of heart. The content is related to unlocking of soul. The content is related who is a true devotee in the eye of God. So these things are related to goodness, virtue, uplifting of morality. So if you take these content, it means that these contents are related to reformation. ये जो content है यह किससे related है? Reformation से related है। किससे? Reformation से। Did you get the point? Yes, sir. Yeah. And what you have to keep in your mind when you read this man, whether you read on his blindness, paradise lost, paradise regained, you will come to know उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वह रिफॉर्मेशन से रिलेटेड है और उसका जो प्रेजेंटेशन है वह रिनेशा से रिलेटेड है। द स्पिरिट ऑफ द रिफॉर्मेशन प्रोवाइड्स द कंटेंट एंड स्पिरिट, दिस इज द सिग्निफिकेंट पॉइंट, कंटेंट एंड स्पिरिट ऑफ मिल्टन्स पोइट्री एंड द स्पिरिट ऑफ रिनेशा classicism, its mold and pattern. Mold and pattern means in what way the things have been composed, what the style, what the art of expression, what the way have been taken to present the subject matter. That is the significant point. If you go with the poem, already I told you, if you explain any poem, you have always to keep these two things in your mind, what has been said, how has been said. जब आप ये कहते हैं what has been said, तब उनकी पोयम में रिफॉर्मेशन नजर आता है। जब आप ये कहते हैं how has been said, तब उनकी पोयम में रिनेशा नजर आता है। Did you get this point? Yeah, okay, that's good, that's good. Now, explaining here Milton's Puritanism, a product of the Reformation. If you talk about Milton's Puritanism, if you talk about Milton as a Puritan poet, या मिल्टन के ऊपर impact of Renaissance or influence of Reformation, you come to know कि Milton's Puritanism, a product of the Reformation, and his Hellenism, a product of the Renaissance. If the point come, what did he get from Renaissance? His Hellenism. And what is Hellenism? Hellenism refers to Greek beauty. Hellenism refers to Greek art. Hellenism refers Greek culture. उसमें विश्वास करना, उसको लेकर के चलना, ये बात उन्होंने कहाँ से सीखा? रिनेशा से सीखा। लेकिन उन्होंने जो है क्या किया? रिफॉर्मेशन से प्यूरिटेनिज्म सीखा। प्यूरिटेनिज्म का मतलब गॉड, सन ऑफ गॉड, एंजिल, Satan, fall of Adam and Eve, Jesus Christ, life after death, these things he came to know. बाइबल का उनका अपना जो कॉन्सेप्ट रहा। So you come to know, you find in the works of John Milton, there is the concept of Puritanism and there is the concept of Hellenism. If you say, if you use the word Puritanism, it is an ideology which he could learn from Reformation, and Hellenism is an ideology which he could learn from Renaissance. और इन दोनों को उन्होंने क्या किया है? हार्मोनाइज किया, क्लोजली हार्मोनाइज, साथ साथ जोड़ दिया है, लेके चलने की, क्लोजली हार्मोनाइज। अब उसके बाद आई हैव टेकन कि हाउ डू यू फाइंड रिफॉर्मेशन एलिमेंट इन द वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन।
related to subject matter as his soft and steady puritanism. If you talk about रिफॉर्मेशन, तो उनमें जो रिफॉर्मेशन का सबसे बड़ा आस्पेक्ट है वह क्या है? प्यूरिटेनिज्म है. एंड व्हाट इज प्यूरिटेनिज्म? हिज बिलीफ इन गॉड. व्हाट इज प्यूरिटेनिज्म? What does he think about Christianity? What does he think about religion? What did he get from the Bible? सॉफ्ट और स्टीडी उनका जो प्यूरिटेनिज्म. एक तो एक पॉइंट ही आपको उनके उसमें देखने को मिलेगा. सेकेंड पॉइंट है, उन्होंने एक इम्पोर्टेंट पोयम लिखा था, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी, एंड इट वाज द फर्स्ट पॉपुलर पोयम ऑफ जॉन मिल्टन. ही कंपोज्ड दिस पोयम at the age of 21 when he was pursuing graduation, and after composing this poem he has been addressed as Lady of Christ. और ये जो पोयम है ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी जो मैंने आपको बताया, इसमें उन्होंने पेगन गॉड को क्रिटिसाइज किया है जो उनके रिफॉर्मेशन स्पिरिट को दिखाता है. इसी तरह से पैराडाइज लॉस्ट में ही टेल्स अबाउट द फॉल ऑफ एडम एंड ईव, and in paradise regained he tells about how Jesus Christ has been tempted by Satan, are such beautiful works which show the spirit of puritanism, जिसमें किसका स्पिरिट नजर आता है? प्यूरिटेनिज्म का. So what I did, I just explained only four poems: Ode on the Morning of Krishna Nativity, Paradise Lost, Paradise Regained, and I have also to mention on his blindness, but I didn't mention here because already I have discussed with you. These are the works of John Milton, where you find what? Where you find the impact of Reformation. Yeah, where you find that he talks about he talks about God, Son of God, Satan, who is a true deity in the eye of God. What God expects to human, these things you will come to know. So these works shows what? These works shows the Reformation element, how Reformation influenced him. क्या उनका जो मास्टरपीस पैराडाइज लॉस्ट है, क्या उनका जो मास्टरपीस पैराडाइज रिगेन्ड है, क्या उनकी जो पोयम ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी है, क्या उनकी जो पोयम ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, ये बगैर ये बगैर रिलीजियस सब्जेक्ट मैटर को या गॉड को सेटन को बात किए परफेक्ट होती है? नो. वही पूरा थीम ही है, सब कुछ बाइबल से. नाउ रिनेशा एलिमेंट, हाउ डू यू सी रिनेशा एलिमेंट? फर्स्ट आई टोल्ड यू कि व्हाट डू यू फाइंड इन हिज वर्क. जब आप रिनेशा की बात करते हैं तो उनके वर्क में आपको ह्यूमनिज्म नजर आएगा, उनके वर्क में आपको लिबरलिज्म, उनके वर्क में आपको इंडिविजुअलिज्म, पैट्रियटिज्म, कल्ट ऑफ ब्यूटी. These are the basic characteristics, these are the basic features of Renaissance elements which we see in his works. You can take any poem, you can take any poem. If you take what? If you take only Ode on the Morning of Christ's Nativity, he just criticizes pagan god, and you will come to know the impact of Greco-Roman, Greek god and goddess, and you will also come to know that Jesus Christ was not only for a person, for a community, for a country, for a nation, but he uses that Jesus Christ was sent on earth by God for the welfare of human beings. For what? Welfare of human beings. So concept of humanism. And second point, to liberate human beings from the cycle of life and death. That is the liberalism. He liberated. When Satan whispered in the ear of Eve, and they disobeyed God by taking the forbidden fruit, what happened? They changed from mortal into immortal creature. God got angry and threw them from sky to earth. Then what happened? Cycle of life and death started. And to liberate human beings from this cycle, who came? Son of God or Jesus Christ came.
So you find liberalism, you find individualism, you find patriotism, cult of beauty, beauty ka worshipping, and second important point next, love and appreciation of the literature of ancient Greece and Rome. You also find love and it shows what? Renaissance means rebirth, revival, and reawakening. And in Renaissance, you find what? In Renaissance, you find rebirth, revival, and reawakening, and also appreciation of the literature of ancient Greek and Rome. You come to know about Euripides, you come to know about Aeschylus, you come to know about Sophocles, you come to know about Homer, you come to know about Virgil, you come to know about so many great writers of that time. अगर मिल्टन के पैराडाइज लास्ट की बात की जाएगी तो वर्जिल के एनीट की बात की जाएगी। अगर जो है सैमसन एगोनिस्ट की बात की जाएगी तो हमें ग्रीक ट्रेजिडी पर बात करना पड़ेगा। So how Milton come to know about these things? Milton came to know about these things because he has love and appreciation of the literature of ancient Greek and Rome because he was much influenced by what? By Renaissance spirit. New stress on human life and pursuits. He came to know about new stress of human life and pursuits. उसको लेकर के उन्होंने बात किया कि ह्यूमन लाइफ जो है और जो इसका परसूट्स है, he just started to know about these things and came to know about how these things are significant. न्यू स्ट्रेस ऑन ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो नई चीजें थी, जो उनके ऊपर दबाव था, उसको ज्यादा उसको परसू करना शुरू किए। इन द पोयम ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ कृष्ण नेटिविटी 1629 में जो लिखी गई है, शोज मिल्टन प्रोफाउंड एंड वास्ट नॉलेज ऑफ पेगन माइथोलॉजी। मिल्टन के वास्ट नॉलेज को शो करता है पेगन माइथोलॉजी को लेकर के। His celebration for the arrival of Jesus Christ and the dismay of pagan deities at his birth reflects हिज स्पिरिट ऑफ रिफॉर्मेशन। और उसमें रिफॉर्मेशन भी नजर आता है कि कैसे वो सेलिब्रेशन करते हैं, किसका सेलिब्रेशन? द अराइवल ऑफ जीसस क्रिस्ट। और कैसे जो है वो एक तरह से आगेश में है के है पेगन डेटीज के, और उसको ये रिफ्लेक्ट करता है कि उनके ऊपर किसका इम्पैक्ट था? रिफॉर्मेशन का। लेकिन उनकी जो नेक्स्ट पोयम है El Allegro, I El Penseroso. Already I told you कि El Allegro means what? A poet in happy mood. I El Penseroso, a poet in pensive mood. What did I tell you? I just told you his poem El Allegro, I El Penseroso shows the impact of Renaissance because you will come to know it shows his individuality. In the very beginning, he has spirit to start his life, to make his career bright, and it also shows his ambition that he has planned to write something, his future plan. बट मिल्टन मास्क, मिल्टन ने के जो मास्क है, खासकर कामस और आर्केड्स, अगर आपको याद होगा मैंने वो भी पढ़ाया था। मिल्टन का जो मास्क है इज इन स्पिरिट एंड पर्पस हाईली प्यूरिटेनिक, वो हाईली प्यूरिटेनिक है। इट्स ओनली रिनेशा कैरेक्टरिस्टिक इन इट्स फॉर्म। रिनेशा कैरेक्टरिस्टिक जो नजर आता है वह फॉर्म में नजर आता है, रिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक जो नजर आता है वह कंटेंट में नजर आता है। नेक्स्ट पोयम द फॉर्म ऑफ लिसिडास। लिसिडास का मतलब उनकी एलिजी जो उन्होंने एडवर्ड किंग की मौत पर लिखा। द फॉर्म ऑफ लिसिडास इज क्लासिकल। लिसिडास लिखने का जो तरीका है वो क्लासिकल है, बट द थीम एंड एक्सप्रेशन आर इंडिकेटिव ऑफ अ प्यूरिटैनिक स्पिरिट। लेकिन जो इसमें थीम है और जो एक्सप्रेशन है वह प्यूरिटैनिक है। इसका मतलब कंटेंट क्या है? प्यूरिटैनिक है, रिफॉर्मेशन से जुड़ा है। लेकिन फॉर्म यानी स्टाइल, जो उसका प्रेजेंटेशन का तरीका वह किससे जुड़ा हुआ? वह जो है आपका उससे जुड़ा हुआ है, रिनेशा से। नेक्स्ट है बोथ इन थीम एंड पर्पस पैराडाइज लास्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिफॉर्मेशन स्पिरिट। कह रहे थीम और पर्पस के हिसाब से देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि पैराडाइज लास्ट रिफॉर्मेशन स्पिरिट को प्रेजेंट करता है थीम और पर्पस में। इट्स थीम इज द फॉल ऑफ सेटन। इसका जो थीम है फॉल ऑफ सेटन है, एंड दो हिम द फॉल ऑफ मैन, और थ्रू थ्रू हिम द फॉल ऑफ मैन। दोनों बात दिखाई गई, फॉल ऑफ सेटन एंड फॉल ऑफ मैन। लेकिन फॉल ऑफ मैन को बुक फर्स्ट में लाइन नंबर 1 से लेकर 26 में जो मैंने आपको पढ़ाया है वहां पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है? फॉल ऑफ मैन। इट्स पर्पस इन इज इन मिल्टन ओन वर्ड्स। मिल्टन के खुद के शब्दों में, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। दिस इज द थीम। इफ यू टेक
You will come to know it's written in blank words and the theme is to justify the ways of God to man. कैसे गॉड ने न्याय किया आदमी के प्रति और क्या न्याय किया जब earliest forefathers Adam and Eve they disobeyed God, then God sent them to earth, but again He sent a prophet Jesus Christ. See how they can regain their blissful state. So that was what that was the justification of God to man. Just I want to know, are you getting these points? Yes, sir. Yes, sir. Oh, oh, good. इन इट्स फॉर्म अगर फॉर्म की बात करेंगे पैराडाइज लास्ट कन्फर्म्स क्वाइट स्ट्रिक्टली टू द क्लासिकल एपिक इफ आई टॉक अबाउट फॉर्म तो पैराडाइज लास्ट किसके करीब है क्लासिकल एपिक के करीब है और फॉर्म को जब आप क्लासिकल एपिक की बात करते हैं तो क्लासिकल एपिक का मतलब होमर का इलियड ओडिसी और वर्जिल का एनीड मैंने बताया था इफ यू टॉक अबाउट पैराडाइज लास्ट यू हैव टू नॉक या इलियड्स Homer's Iliad and Odyssey will knock you. Why? Because the pattern of Paradise Lost has been taken from Virgil's Aeneid. That is also an example of literary epic or secondary epic. वर्जिल के एनीड को किसने ट्रांसलेट किया है? Who has translated? Because it was in Latin. Who has translated? Henry Howard Earl of Surrey has translated. Book second and book four 1540 में. मिल्टन upholds all the conventions of the epic. मिल्टन ने सारा conventions of the epic ही upholds. It has fable, इसमें सब कुछ है. Fable है, action है, character है, and diction है, as demanded of a classical epic. If I talk about classical epic, it means that Greco-Roman art and culture. And Milton came to know about these epics because he was much influenced by Renaissance. It's written in blank words. Instead of the pagan marvels, we have Christian miracles. What we find, not pagan marvels, but Christian miracles wrought by God and His Son. And who is Son of God? Jesus Christ. Then there is the invocation to the muse और पूरा muse का invocation यहाँ पे किया गया. Muse का क्या नाम है? Do you find Uranians. any name? Yes. Then there is the invocation to the muse. Though Milton's muse is not the conventional muse of epic. उनका कन्वेंशनल सो यू फाइंड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पैराडाइज लास्ट क्या क्या है सेकेंडरी एपिक है वर्जिल के एनीड पर आधारित है 12 किताबों में डिवाइडेड है थीम क्या है टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन कब आई है 1667 में आई है यू फाइंड म्यूज यू फाइंड म्यूजेस नॉट म्यूजेस मॉजेस प्रॉफिट Prophet Moses, you find Siloa's brook, you find Onion Mountain, you find something he thinks unattempted either in prose or rhyme, you find blank words, you find verse paragraph, you find Virgil's ka need ka model, all these things you come to know. This is why what I was saying, why I have taken this particular thing because it whole covers the theme which I discussed with you before a day. Then there is the invocation of the muse, though Milton's muse is not the conventional muse of epic poetry, but the Holy Spirit. एक क्वेश्चन पूछा जाएगा मिल्टन की म्यूज कैसी है? She is not the conventional muse of epic, but Holy Spirit, Urania. In short, it may be said that the form of Paradise Lost reflects the Renaissance spirit. जो इसका form है, उसमें Renaissance spirit है, जो इसका theme है, उसमें Reformation spirit है. There is a very little of the Renaissance spirit in Paradise Regained. Paradise Regained 4 किताबों में है ये भी लिटरेरी एपिक है एंड ऑलरेडी टोल्ड यू इसका जो थीम है टेम्पटेशन ऑफ जीसस क्रिस्ट बाय सेटन है और उनका अगला वर्क है 1671 में आती है सैमसन एगोनिस्ट उनका जो ग्रीक मॉडल ट्रेजिडी जो इनका एक ट्रेजिडी है जो ग्रीक मॉडल पर बेस्ड ऑन है एंड यू फाइंड कि सैमसन को लेकर उन्होंने बात किया इन दोनों में रिनेशा स्पिरिट कम है अगर इन दोनों में कोई चीज है तो वह क्या है रिफॉर्मेशन है but both have religious subject matter. In these two literary pieces of Milton, one can see the spirit of Reformation, not Renaissance. Overall, it can be said that Milton was a poet of both Reformation and Renaissance. In most of his works, we see the spirit of these two movements in form
and content of his literary work. So nothing you find some information, and you came to know for the first time how do you see the of Renaissance and Reformation. So just what did I tell you? I have just shared. I explained you those this matter I have prepared only for GIC, but when I start to write, the point come in my mind ki why I should not discuss with you also. Because if you go with these points, you will never forget Paradise Lost, you will never forget Renaissance, you will never forget Reformation and the child of Spencer. You will never come to know who blended, who synthesized, what is Renaissance, what is Reformation, how do you find its influence in the works of Milton. So if you have any query, let me know. आप मुझे बताइए. If you have any query, you can let me know. And one thing I would like to tell you, I have shared a PDF file yesterday, not that I discussed, the file which I have written uh, by using, you can say, that is manuscript, not in printed form. That is manuscript related to Alexander Pope and his age. उसे आपको पढ़ना है, वो बहुत ज़रूरी है। उसमें मुझसे रिलेटेड सारी चीज़ें बात की गई है, क्योंकि एक्सक्यूज टुमारो मी आई सर। विल गो लेट मी कंप्लीट टुमारो आई विल गो लेट मी कंप्लीट टुमारो आई विल गो विद what टुमारो आई विल गो विद rape of the lock canto first. या या सुनील जी हाँ सर, से पॉलिटिकल सलाह स्पेंसर सर किसने कहा है सर मिल्टन को? where I go with the political sir, yeah, that's a very important point, but I have to check it because I am Sir, just missing here. sir, Yeah, who said political Spencer? Son of political Spencer. son. Yeah, Sir, yeah. I That's think William Blake, if I am not yeah, wrong. yeah. Something I have already discussed this particular thing. It has been discussed by when I was delivering a lecture on another platform, that was PGT. But this time, this particular statement has been slipped from my mind. I don't know, but most probably William Blake हो सकते हैं या उसी romantic age का कोई होगा. I have to ओके check सर, it, Sunil. I have to check ओके it. Yeah, you can check it your own self. You will get it. It's not a very यस toughest यस सर, thing. You बिल्कुल can get it. सर। उसमें वो जी ऐसा चीज नहीं है. एंड बी जी प्रिपेयर फॉर टुमारो. और अब इसके ओके बाद जो आपका होगा वो केवल टेस्ट का काम ज्यादातर, क्योंकि हमने टॉपिक काफी कवर किया है. सारे कंटेंट आपको मैं भेज रहा हूँ, पीडीएफ फाइल में भेज रहा हूँ. और मैं बहुत ही शिद्दत के साथ लग करके कि आपको कोई एक्सक्यूज का मौका ना मिले. तो बी प्रिपेयर फॉर सर। द टेस्ट इन जब आप जनवरी. जनवरी इन में सर, जनवरी या जब सर टेस्ट इन लेना जनवरी. होगा सर, उस जनवरी सर, उसके बाद एक मैसेज डाल दीजिएगा सर कब लेना है। उसके सर पहले से तो थोड़ा सा और अच्छे से तैयारी हो जाएगी सर। जरूर जरूर डाल देंगे, मैसेज भी डाल देंगे. एंड आई विल कीप इस बार डंडा आल्सो टू ऑल ऑफ यू. क्योंकि ओके सर। आप लोग ये नहीं बता पाए कि वर्जिल ने कि एनीट का ट्रांसलेशन किसने किया. उस समय